Your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. So क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज आपके पेरेंट्स को दो हाउस ऑफर किए गए हैं या फिर दो हाउस सजेस्ट किए हुए हैं लेने के लिए. वन हाउस इज ऑन द रोड साइड, मतलब रोड के जस्ट साइड में है एक घर, एंड एक घर जो कि रोड से 3 lanes दूर है, अवे फ्रॉम रोड. तो आप कौन सा हाउस पेरेंट्स को सजेस्ट करोगे लेने के लिए? सो एक्चुअली जो घर रोड के जस्ट साइड में होगा वहाँ पर व्हीकल्स का काफ़ी शोर, उनके हॉर्न की आवाज़ आएगी और काफ़ी ज़्यादा नॉइस होगा. दैट मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. इन एंड इन द हाउस विच इज़ अवे फ्रॉम द रोड, वो काफ़ी एक पीसफुल एनवायरनमेंट में होगा. पीसफुल एनवायरनमेंट कंपेयर टू द हाउस ऑन द रोड साइड. जो घर रोड के जस्ट साइड में होगा उसके कंपैरिजन में वो घर जो कि रोड से काफ़ी दूर है या फिर 3 lanes दूर है, उस घर में पीसफुल एनवायरनमेंट होगा. सो यू शुड सजेस्ट योर पेरेंट्स टू बाय ए हाउस which is 3 lanes away from the road. So we should write the answer like we should suggest to buy a house which is 3 lanes away from roadside because the house on the roadside will be having the environment of noise pollution because of vehicles passing, and that noise may cause harmful effects on the body. इसीलिए हमें एक ऐसा घर सजेस्ट करना है जो कि रोड से 3 lanes दूर हो.